हम लोगों ने कहाँ तक किया था? आई थिंक, टू सी, we were done till here, right? तारीफ शाहिद, tell me guys. Yes, sir. Just give me a second. Moving on. Achha, we did this, na? Copper cannot liberate. Then we have one more deviation, and the deviation is regarding manganese, nickel, and zinc. So we will look at these one by one. Why manganese is having, if you look here, titanium, vanadium, chromium. And then we expected manganese to be a bit high, but it is what is low. है? It is not, it should be here. इस तरह से जाना चाहिए था, but it is not here, it is a bit low. Then what we are saying that manganese, it has more negative E naught value. Why it is happening? And similarly, if you see here, there is a decrease, then there is an increase in Fe, then there is a decrease in cobalt, and then there should be what? There should be a further more decrease in what? In the nickel case, but nickel के यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है. If you compare it with what? If you compare it with the zinc one, the zinc is quite low. फिर उसके बाद nickel में भी exception है, and then we have exception in the manganese. So we will deal with this one by one. Just give me a second. Now, regarding manganese and zinc, we can say that our half filled and this is fully filled, right? That is why Mn2 positive and Zn2 positive are more stable. Are they more stable than manganese? No. Is manganese 2 positive more stable than manganese? No, it is not more stable than manganese. But you can say that what was happening before manganese? Chromium. Okay. Let us see the change here. When you are going from chromium to chromium 2 positive, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? chromium 2 positive, then chromium is 4s1 3d5, and chromium 2 positive is 4s0. You'll remove one electron from 4s and remove one electron from 3d. We'll get 3d4. But so this is going to be what? It's not going to be very easy, na, because we are going from stable to unstable. But if you go from here, Mn to Mn2 positive, 4s2 3d5, and this is 4s0 3d5. Now you can say that manganese 2 positive is more stable than chromium 2 positive. That is why it is having more negative E naught value. ठीक है, यानी कि Mn से Mn2 पॉजिटिव जाना आसान है, तो दिस विल हैव हाई एसओपी हो रहा है ना, E naught वैल्यू यहाँ पे हाई होगा, और Mn2 पॉजिटिव से Mn जाना क्या हो जाएगा? इट विल बी मोर नेगेटिव. विल बी मोर नेगेटिव. एक और चीज ध्यान रखिएगा, आपके पास जो सवाल आएगा ना हमेशा, इट विल बी रिगार्डिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल. बट आपके जितने भी एक्सप्लेनेशन आएंगे, दे विल बी ऑलवेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. देखिए, आपको जब भी यहाँ पे देखिए SRP की बात हो रही है ना, M2 पॉजिटिव से M, so this is reduction potential. But when we are explaining things, we always talk in terms of oxidation, because oxidation ही होता है generally. ठीक है, so E naught value, it will be highly positive when you go from, the SOP is what? It is very highly positive. So of course the SRP is going to be what? It will be highly negative. Make sense? Yes or no? Please tell me guys. बात समझ में आई? हाँ या ना, जल्दी बोल दे प्लीज. नहीं समझ में आया क्या? तारीफ शाहिद. Yes, sir. Understood. Why E naught of Mn2 positive and Zn2 positive is highly negative?
Why E naught of Mn2 positive and Zn2 positive is highly negative? Done everyone? Tariq, Sabah and Shahid? Is Tariq, Rabah, Shahid done? नहीं हुआ है? So 1 minute. अच्छा. Let me know once you're done. Shahid done? Shahid, are you done? ठीक. Now, we talked about Mn and Zn. Okay. Let us now talk about nickel. What happens in nickel? So the reason for nickel is its very small size. The reason is very small size. Please see what is happening. We have nickel 2, nickel 2 positive. When you form nickel 2 positive, then what is going to happen? This nickel 2 positive will be, let us suppose this is the nucleus and it is having a smaller radius. You have positive charge here. Now, because of the smaller radius, the positive charge, the charge upon volume, size is small, na? So volume जो क्या होगा? छोटा होगा. The charge upon volume, it is known as charge density. So the charge density will be very high. Because of its lower volume, smaller size, the charge density will be very high. That one thing should be clear with you guys. ये evident है, ठीक है? That nickel has high charge density. Why? Because of its small size. Now, अच्छा, comparable to what? In comparison of what? In comparison of copper and zinc. In comparison to copper and zinc, what do we have? The value for charge density of nickel is very high because of its small size. उससे क्या होगा? उससे होगा ये that this when the charge density is very high, then it will be able to attract the water molecules very effectively. Going to attack very effectively. Now, when the attractive forces will be very high, this process will become easy. If this process is easy, that means it is going to be the E naught, that is SOP. SOP will be highly positive. If nickel to nickel 2 positive is easy, then nickel 2 positive to nickel, the reduction SRP
दिस विल बी वेरी डिफिकल्ट एंड हाईली नेगेटिव. ठीक है. सो अगेन द क्वेश्चन इज व्हाट? E naught of nickel 2 positive is highly negative. Why? ऐसे लिखिएगा, निकल 2 पॉजिटिव आयन हैज हाई नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ड्यू टू, यहां पे आ जाएगा क्या? ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी अमॉन्ग द एलिमेंट्स. बस इतना ही लिख दीजिए, ये लिखने की जरूरत नहीं है. Arif and Shahid, raise your hand. Just you need to write this one part. है ना? Question E naught of Ni2 plus is highly negative. Why? The reason you will write, Ni2 positive has high negative enthalpy of hydration due to high charge density. That's it. Arif, just waiting for you. Okay, fine. Now, so these are the things that we saw for E naught of metal 2 positive to metal. ठीक है. Next, standard electrode potential of M3 positive to M2 positive. Now this is important. यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा जरा. दो चीजें हैं. ठीक है. There are two things. एक तो we will be comparing absolute E naught. ठीक है. मेटल से कहा जा रहा है, मेटल 3 पॉजिटिव से वी आर गोइंग टू मेटल 2 पॉजिटिव. फाइन. सो एक तो हम लोग एब्सोल्यूट ई नॉट कंपेयर करेंगे कि ई नॉट पॉजिटिव है या नेगेटिव है. काम करते हैं, हमारे पास स्पेस उतना नहीं है इस वजह से. सी देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज यहाँ पे. या तो आपके पास क्या होगा, ई नॉट इज पॉजिटिव. एक केस तो ये हो सकता है कि M3 पॉजिटिव से M2 पॉजिटिव बहुत आसानी से चला जा रहा है. दैट मीन्स व्हाट इट वुड से, ई नॉट इज पॉजिटिव. इसका मतलब क्या होगा? दिस प्रोसेस इज इजी, राइट? रिडक्शन is easy. Reduction will be easy only if, most probably only if it will be highly, E naught will be highly positive only if what is happening? Reduction is easy. This would mean M2 positive is stable. ठीक है. M2 positive is stable and M3 positive is getting reduced, then we can say is strong oxidizing agent. बात समझ में आ रही है ये सोलो पीसल में? M3 पॉजिटिव क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, तो दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा. गॉट इट गाइस? रबा, शाहिद एंड तारीफ, दिस मेक सेंस? यस और नो? बोलो भाई. अरे बोलो. नहीं समझ में आया? रबा, शाहिद एंड तारीफ. शाहिद एंड तारीफ, टेल मी गाइस. कैन यू प्लीज हैव योर माइक्स ऑन? आप लिखने लगने लगता है. प्लीज हैव योर माइक्स ऑन. हाँ, समझ में आया तारीफ एंड शाहिद? Sir, can you explain again? ठीक है. देखिए, माइक बंद नहीं करना है. ठीक है. ध्यान से आप जवाब देते रहिए. M3 पॉजिटिव से M2 पॉजिटिव, इफ इट इज इजी देन द E नॉट विल बी पॉजिटिव ना. ये पता है? हाँ Yes, या ना sir. बोलिए. ये Yes, पता है sir. आप लोग को. व्हाट इज Yes. हैपनिंग व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम 3 पॉजिटिव टू 2 पॉजिटिव? क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? Reduction. अरे क्या हो रहा है? 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव जा रहा है. व्हाट इज हैपनिंग? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन? नहीं Reduction. पता. रिडक्शन हो रहा है, राइट?
Fine. Then I'm saying reduction is easy. Now this process is easy only, but it will tell you that M2 positive आराम से बन जाएगा ना, तभी तो ये easy होगा. That means M2 positive will be stable. Make sense? Yes, sir. ठीक है. Now one more thing is that if reduction is easy, M2 positive is stable, यानी किसका reduction हो रहा है? M3 positive का. That means M3 positive will easily get reduced. Then it will oxidize other. It is strong oxidizing agent. Make sense? Yes or no? Yes, sir. ठीक है. अब ध्यान दीजिए क्या लिखा था हमने. M3 positive is strong oxidizing agent. अगला है आपका when E naught is negative. इसका मतलब क्या होगा? अगर E naught नेगेटिव है तो यहां से यहां जाने का प्रोसेस मुश्किल. If this process is negative, this ulta process will be what? Easy. So if E naught is negative, then what I will say? Oxidation of M2 positive is easy. This would mean M3 positive is stable. And what else we can say? M2 positive आसानी से ऑक्सीडेशन ऑफ M2 पॉजिटिव इज इजी ना. M2 पॉजिटिव आसानी से M3 पॉजिटिव बन जा रहा है. इसका मतलब M2 पॉजिटिव का ऑक्सीडेशन इजी है, तो M2 पॉजिटिव इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. मेक सेंस? ये सोनो प्लीज मी गाइस. क्या ख्याल है? तारीफ रबान शायद समझ में आया. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अच्छा, ये तो हो गया एब्सोल्यूट टर्म्स में बात कर रहे हैं हम लोग, है ना. एब्सोल्यूट टर्म्स में बात कर रहे हैं. अब इसको लिखना चाहते हैं क्या आप लोग? लिख लीजिए. चलिए इसको लिख लीजिए. तारीफ रबा एंड शाहिद, raise your hand if you're done.
Rabha, you have written na? Yes, sir. ठीक है, चलिए. नो, अच्छा खैर इसको छोड़ दीजिए. These are the standard electrode potential of M3 positive to 2 positive. Now, when you are going to look at the data, you will see that when you go from scandium to cobalt, slowly what is happening? It is increasing. The values are increasing even though they are not increasing steadily. There is no general, general trend hai, but there is ups and downs in between. Okay. Now, there are a few points that we have to focus. पहला तो अगर आप scandium को देखें, this is highly negative. Okay, this is highly negative. Then when you look at Fe, so Fe में क्या हो रहा है? It is from 1.57. चलिए एक एक करके हम सबको ही बता देते हैं. ये आपको देखना है. It is highly negative. Then titanium is 0.37. Then 0.26. Okay, fine. It is decreasing. No. क्या हो रहा है? Minus 0.41. So vanadium is less negative. Can all of you see that? Yes or no, please tell me. हिंदी बताएं. Can you see vanadium is less negative than titanium and chromium also, no? So there is a dip यहाँ पे 0.37, then you have 0.41 और बीच में एक आपके पास 0.26 आ गया. ठीक है. Now next if you see manganese is highly positive. Fe is again what? Less positive. Plus 1.57 से 1.97 है, बीच में 0.77 आ गया. ठीक है. सो वी विल अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज पॉइंट्स जो भी हम लोगों ने यहाँ पे सर्कल किया हुआ है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे व्हाई इट इज हैपनिंग. फाइन. ऑल्सो सॉरी गाइस, ये क्या आ गया? जस्ट गिव मी अ सेकंड. Yeah. So I was saying, also for zinc it has not been given, but zinc also has high positive value. तो scandium का क्या है? High negative. It is highly negative. Now, if it is highly negative, what is happening? Scandium 3 positive से कहाँ जा रहा है? Scandium 2 positive. If this process is highly negative, this process will be highly positive. Make sense? Yes or no? Please tell me. बोलो भाई. ये आप लोग को समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है. Scandium 3 positive से 2 positive क्या है? बहुत ही ज्यादा मुश्किल. It is very difficult to go from scandium 3 positive to 2 positive. Now, why is that? See here, guys. Scandium 3 positive. The atomic number for scandium is 21. For scandium 3 positive, the electronic configuration will be 4s0, 3d0. Scandium 2 positive is going to be 4s0, 4s 0 and 3d1 इस तरह से. ठीक है. Now this is going to be very difficult for you guys. Why? Because here if you see, here we have d0 configuration and 21 में से अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, this will give you 18. Scandium has 18 electron, which is as that of argon. That is why scandium 3 positive is very stable. It will be very difficult to go from scandium 3 positive to 2 positive. Now, why is vanadium very? It is less negative. Vanadium 3 positive say vanadium 2 positive is less negative. Why is that? The reason here is electronic configuration. Vanadium 3 positive. Vanadium is, this is 22, this is 23. Vanadium 3 positive, it is having 4s0 and 3d1 electron. ठीक है. 1 या 2. Remove 3 electron, 3d2. Remove 2 electrons from the s and 1 electron from the d. Vanadium 2 positive is having 4s0 and 3d3. Now, in aqueous solutions, what happens when you have vanadium 3 positive, vanadium 2 positive? This vanadium 2 positive, it makes a octahedral complex.
And in octahedral complex, it gets into splitting of d orbital, the Eg and T2g orbital. Because we are having D3 configuration, the T2g is half filled. So vanadium 2 positive is stable due to half filled T2g3 configuration. This is the reason for vanadium. Why scandium is highly negative? Because scandium 3 positive stable. Vanadium 3 positive से 2 positive, it is less negative. उतना highly negative नहीं है. Why? Because vanadium 2 positive is more stable. ठीक है? इन दोनों को लिखिए जरा. स्कैंडियम के बारे में कैसे लिखना वो हम आपको लिख देते हैं. काम ये इतना क्या लिखिएगा. All of you, both guys, understood this? Yes or no? Please tell me. समझ में आया? तारीफ एंड शाहिद. तारीफ एंड शाहिद, understood this? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है. What about this portion? इसको लिख लीजिए जरा. इसको लिख लीजिए. वैनेडियम वाला लिख लीजिए, बाकी मत लिखिएगा. वैनेडियम वाला बस लिख लीजिएगा. Vanadium 2 positive is stable due to half filled T2G3 configuration. इतना ही लिखना बस. This is enough. Can I move on? हाँ guys. Done. Tarif and Shahid. Yes, sir. No. This is as we have written. Scandium 3 positive has lower value due to its stable D0 configuration. Now regarding Fe, Fe is having lower positive value. ठीक है ना? Lower positive value. Why it is that? Because if you go from Fe3 positive to Fe2 positive, Fe3 positive, the atomic number for iron is 26. 3 positive is going to have 4s0 and 3d5 configuration. Fe2 positive is going to have 4s0 and 3d6 configuration. So obviously, Fe3 positive is more stable. That is why it is not as easy to go from Fe3 positive to Fe2 positive. ठीक है? It is positive, है ना? Why it is
less positive, which is saying that is lower value ना, कम positive क्यों है? Because of the stability of Fe3 positive. ठीक है, जब भी आपके पास लोअर वैल्यू है, whether it is अगर हाईली नेगेटिव हुआ तब भी लोअर वैल्यू है, अगर लेस पॉजिटिव हुआ तब भी लोअर वैल्यू है, देन व्हाट विल हैपन, द थ्री पॉजिटिव्स आर गोइंग टू बी मोर स्टेबल. स्कैंडियम 3 पॉजिटिव और आयरन 3 पॉजिटिव्स आर गोइंग टू बी मोर स्टेबल. दूसरा हम देखेंगे Mn के बारे में और जिंक के बारे में. दीज आर हैविंग हायर वैल्यूज. दे आर हैविंग हायर वैल्यूज व्हाई? Because the Mn2 positive and Zn2 positive are more stable because of D5 configuration and D10 configuration. जब आप Mn के बारे में देखिएगा, Mn3 positive to Mn2 positive. Fine. Mn3 positive to Mn2 positive. Here, if you see the configuration of manganese, it is going to be how much? This is going to be 4s0 3d4, and this is going to be 4s0 3d5. This is stable. That is why it is easy to go from Mn3 positive to 2 positive. That is why the E naught value is quite high. है ना? Similar case था किसमें? Vanadium में भी. But it is less negative. यानी कि higher value है ना? Higher. It is higher than expected. It is more than expected. ठीक है? Mn2 positive और Zn2 positive में क्या है? Because of D5 and D10 configuration. And we have seen this many times. कि जब भी आपके पास बात होती है Mn के बारे में और Zn के बारे में, तो वहां पे the main reason is the D5 configuration is half filled stable and D10 configuration is half fully filled and it's stable. ठीक है? These things will be there in the slide, so no need to write it down right now. अभी इसको आगे बढ़ाते हैं. Fine. Vanadium का नहीं था स्लाइड में, vanadium का हमने लिखा दिया आपको. Now, moving on is the study of electrode potential, जो कि important था. Due to the stability of various oxidation state, ये हम लोगों ने समझ लिया. इसमें एक चीज जो है ना ऐड करनी हमें, just give me a second, just add a slide here. अच्छा चलिए इसी में करते हैं. इन द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ना, एक सवाल है जो हम लोग करते हैं. प्लीज राइट अ क्वेश्चन. ट्रांजिशन मेटल्स शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट. ट्रांजिशन मेटल्स शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर ऑक्साइड्स एंड हलाइड्स. ठीक है, इस तरह से एक सवाल होगा. तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? The answer is going to be very simple. Why they are having higher oxidation state? Why they are having higher oxidation state in their oxides and halides? Because इरेजर यहाँ पे निकालना पड़ता है. ट्रांजिशन मेटल oxygen and halogens are highly electronegative and can balance the high oxidation state. ठीक है, एक तो ये सवाल आएगा. ट्रांजिशन मेटल में आपके पास जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इट इज शोन बाय ऑक्साइड्स और हैलाइड्स. ठीक है, फॉस्फाइड नाइट्राइड वगैरह में उतना शो नहीं करता है. नाउ वन मोर क्वेश्चन दैट इज देयर, वो ये होता है कि transition metals show higher oxidation state in their oxides, in their oxides than in fluorides. ठीक है, so when they are going to compare with
ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, है ना, ऑक्साइड और फ्लोराइड के बीच में जब कंपैरिजन आएगा, देन द आंसर इज गोइंग टू बी बिकॉज oxygen can form multiple bonds, but fluorine can form only single bond. Therefore, oxides of transition metal show higher oxidation state than fluorides. Done, guys, everyone? Waiting for Tarif and Shahid. Just waiting for Tarif now. Tarif, raise your hand once you're done. Okay, everyone is done. Moving on. Here we have chemical reactivity, but this is something that you have already seen in electrochemical series. Okay. Now, one more question that is generally asked regarding the E naughts is, if you see the values, they are generally, I can say that if you go from titanium to zinc, they're generally increasing, even though there is some ups and downs here. So एक यहाँ पे general trend के हिसाब से ये पूछा जा सकता है that when you the E naught value of M2 positive to M, it is what is happening, it is increasing, right? More negative से less negative हो रहा है, ठीक है? It is increasing. Now what does it show? It shows that there is a decreasing tendency to form divalent cation. ध्यान दीजिएगा, if SRP, है ना, ये सारी की सारी चीजें क्या है? This is SRP. If SRP is highly negative, this means standard oxidation potential is highly positive.
If SOP is highly positive, that means M2 positive, the formation of M2 positive is easy. है ना? लेकिन क्या हो रहा है? As we are going from titanium to zinc, what is happening? The standard oxidation potential, it is not increasing. It is what is happening? The standard reduction potential is increasing. Reduction potential है ये. It is increasing. So SOP is decreasing, and the formation of M2 positive is becoming difficult and difficult. है ना? तो यहीं पे यहाँ पे बात है. The value indicate the decreasing tendency to form divalent cation. ठीक है? Due to increase in the sum of first two ionization enthalpy. In ionization enthalpy, we saw that when you go from titanium to zinc, the ionization enthalpy increases. है ना? तो ionization enthalpy increase करेगी, तो divalent यानी two positive cation बनना मुश्किल होता जाएगा. It will be difficult to form two positive M2 positive cations due to high ionization enthalpy. Electron remove करना मुश्किल है. That is why it is difficult to form metal to metal 2 positive. ठीक है? This is also there in the notes. आगे बढ़ते जरा. Please see here, guys. For the E0 value of M3 positive to 2 positive, we have seen that because these are what highly positive, we can say Mn3 positive and cobalt 3 positive ions are what? These are strong oxidizing agent. ठीक है? These are strong oxidizing agent. क्यों? Because these are what? Highly positive. और जो दो हमारे पास क्या है? Which are negative, for them what we can say? These are strong reducing agent because they have what? Highly negative electrode potential. ठीक है? इनका highly negative होता है. That is why these are strong reducing agent. When they are strong reducing agent, they will be able to liberate H2 from dilute acid. They will be able to liberate H2 from dilute acid. But what? Chromium 2 positive. ठीक है? Titanium 2 positive, vanadium 2 positive, and chromium 2 positive. These are what? Strong reducing agents. Right? This thing is also there in the slide. हम लोगों ने पहले भी देखा था. What are going to be strong reducing agent and strong oxidizing agent, है ना? जो कि पहले हमारे पास था. This was strong oxidizing agent. Now, moving on. We have magnetic properties. What are magnetic properties? Magnetic properties भी हम लोगों ने देखा हुआ है, right? अच्छा, एक काम करते हैं. I need a blank slide अगर हो तो. एक ना यहाँ पे सवाल है रिगार्डिंग कॉपर. ठीक है? There is one question that is generally asked regarding copper. उसको भी जरा लिख लीजिए. Write it like this. The question is simple. Copper positive is unstable in aqueous solution. Copper positive is unstable in aqueous solution. Why is that? You will write here. The answer is copper positive shows disproportionation reaction in aqueous solution. कैसा रिएक्शन शो करता है? Copper positive, it forms copper 2 positive and copper. तो बेसिकली 2 copper positive होता है. एक copper positive क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन दे देता है. That means it becomes copper. और दूसरा वाला क्या होता है? It becomes copper 2 positive. Now this is only because the copper 2 positive is more stable than copper positive. ठीक है? You write here. Copper 2 positive is more stable than copper positive due to higher delta H hydration of copper 2 positive. Copper 2 positive में ज्यादा positive charge है. That is why the hydration enthalpy is more for it, and that is why copper 2 positive is more stable. Please write this down.
Waiting for Tarif and Shahid. Disproportionation reactions are reactions in which the same compound or the same species is getting oxidized and reduced. Just waiting for Shahid now. Done everyone. ठीक है. Just give me a second. So in magnetic properties, we know paramagnetism, diamagnetism, all of these things. We also know the spin magnetic moment. It is root over n into n plus 2, where n is the number of unpaired electrons. Try this question, guys. If the following has greatest paramagnetic character. Paramagnetism means more number of unpaired electrons. Send the answer in the Zoom chat. Sorry, do it once again. Not right. Okay, sir. Electrons are removed. पहले कहाँ से electron remove होगा? 4s से या 3d से? Tell me where are the electrons removed from? Force. 4s ना? ठीक है कीजिए फिर. Guys, please see. तारीफ देखिए. Copper positive. Copper is having atomic number what? Copper का होता है 29. It is having electronic configuration 4s1 3d10. Fe का general configuration होता है. This is 26. So it is going to be 4s2 3d6. ठीक है. ध्यान दीजिए. Copper 1 positive. यहाँ पे 3d10 हो जाएगा. That means 0 unpaired electrons. Fe2 positive. 2 positive, that means you are going to remove 4s electrons. 3d6. If you're going to write 3d6, 1 electron, 2 electron, 3 electron, 4 electron, 5 electron, 6 electron. How many unpaired electrons? 4 UPE. है ना? 4 unpaired electrons. Fe3 positive, it is going to be 2 electrons from 4s, 1 electron from D. 3 electron निकालने आपके because 3 positive. This is D5. This will have 1, 2, 3, 4, 5. How many unpaired electrons? 5 UPE, unpaired electrons. Copper 2 positive, it is going to have, remove 1 electron from 4s and 2 electrons from 3d. It's going to have 3d what? 9. Sorry, 1 electron from 4s and 1 electron from 3d. It is going to have 3d9. 3d9 is 1 electron, 2 electron, 3 electron, 4 electron, 5 electron, 6, 7, 8, 9. How many unpaired electron? Only 1 unpaired electron. So the highest number is Fe3 positive, not Fe2 positive. Got it, Tariq? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. चलिए, moving on. अब ये सारे प्रॉपर्टीज जो है ना, कलर है, क्यों कलर होता है? When an electron form from a lower energy d orbital excited to the higher energy d orbital, the energy
of excitation corresponds to frequency of light as well. All of these things we have done in coordination compounds. ठीक है? It absorbs light. When it absorbs light, what happened? Then the frequency generally lies in the visible range. The color observed corresponds to the complementary color of the light absorbed. ठीक है? और these are why do transition elements they show color, है ना? ये हम लोगों ने देखा हुआ है पहले. Now here the formation of colored ions of 3D metals. ठीक है? तो यहाँ पे देखिए टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, Mn 2 पॉजिटिव, Fe 3 पॉजिटिव, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, निकल 2 पॉजिटिव एंड Cu2 पॉजिटिव. कुछ जगह आपको वहां पे कलर नहीं दिखेगा. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू हैव D0 कॉन्फ़िगरेशन तो वहां पे आपको कलर नहीं दिखेगा. व्हेन यू हैव D10 कॉन्फ़िगरेशन तब भी आपको वहां पे कलर नहीं दिखेगा. ठीक है? when you don't have any unpaired electrons then you are not going to see any color D0 में. that means D0 कब होगा? you will have D0 in the case of scandium. ठीक है? उस टाइम D0 हो जाएगा आपके पास and Zn2 positive. ठीक है? these are not going to show any color. Moving on, please write this question. In which of the following pairs are both ions colored in aqueous solution? आपको बेसिकली क्या बताना है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिखेगा. ठीक है? अगर D10 कहीं पे हुआ तो वो इट विल नॉट बी कलर. D0 हुआ तभी वहां पे कलर नहीं होगा. ठीक है? ध्यान दीजिएगा. चलिए, सी हियर गाइस. देखिए ध्यान से देखिए. एटॉमिक नंबर जब आपको दिया तब तो बहुत ही आसानी हो जानी चाहिए. सी निकल इज 28. इफ यू रिमूव 2 पॉजिटिव तो कितना होगा? यहाँ पे D8 होगा. निकल 2 पॉजिटिव इज गोइंग टू हैव 3D8 कॉन्फ़िगरेशन. कॉपर से आप एक इलेक्ट्रॉन निकालिए. कॉपर इज, प्लीज रिमेंबर, कॉपर इज 4s1 3D10. ठीक है? रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s यू विल हैव 3D10 कॉन्फ़िगरेशन. ठीक? सो कोबाल्ट सॉरी कॉपर पॉजिटिव कहीं भी हुआ देन इट इज नॉट गोइंग टू शो कलर. व्हाई? बिकॉज इट इज हैविंग D10 कॉन्फ़िगरेशन. निकल 2 पॉजिटिव एंड टाइटेनियम 3 पॉजिटिव. निकल 2 पॉजिटिव में तो होगा कलर बिकॉज इट इज 3D8. टाइटेनियम इज 22. ठीक है? टाइटेनियम में क्या हो जाएगा? वी आर हैविंग 22 में मतलब 4s2 and 3D2. 4s2 and 3D2. So when you are going to remove 21 22. ठीक है? Now here you are having 4s0 3D1 configuration. 3D1 है तो ये भी शो करेगा कलर, राइट? इट इज ऑल्सो गोइंग टू शो. दिस ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट राइट, है ना? दिस विल शो कलर. व्हाई? बिकॉज यू आर हैविंग 3D8 कॉन्फ़िगरेशन. क्या सवाल है? in which of the following pairs are both ions? अच्छा कलर, both ions colored ना. ठीक ठीक ठीक, my bad. यहाँ पे कॉपर इज नॉट शोइंग कलर. हियर बोथ ऑफ द आयंस आर गोइंग टू शो कलर. निकल 2 पॉजिटिव भी शो करेगा, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव भी शो करेगा. व्हाट अबाउट दिस स्कैंडियम 3 पॉजिटिव? स्कैंडियम इज 23 होता है. नहीं, अरे ये गलत है भाई. दिस इज नॉट राइट, सॉरी, दिस इज माय बैड. सो विल बी 21. Scandium is 21. Sakti V is 23. ठीक है? So when scandium is 23 and you are removing 3 electrons, so it will be having D0 configuration. ठीक है? D0 हुआ तो scandium show नहीं करेगा. That means this pair is not going to show. Scandium 3 positive is not going to show. Correct option is B.
सी और डी क्यों लिख रहे थे? माय बैड गाइस, स्कैंडियम इज गोइंग टू हैव 21, ठीक है। एटॉमिक नंबर फॉर स्कैंडियम इज 20। How Yes, we Rabah. get Ni2 plus configuration 3d8? Can you explain? निकल एटॉमिक नंबर कितना है? It's 28. 28, so it will have 4s2. S2 3d8. Then it's Okay. 2 positive. Now we'll remove the electron or not? Yeah, we will remove the electron. From where? From S2. तो क्या Oh, हो जाएगा? 3D। कल भी okay, यही sir. चीज में आप गड़बड़ा रहे थे, है ना? Yes. Yes, sir. ध्यान रखिए। Done, guys. ठीक है, चलिए मूविंग ऑन। अगेन फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसके बारे में आप जस्ट व्हाट आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आएगा पहले, that compounds in which metal atoms or ions bind to a number of anions or neutral molecules by sharing electrons and ligands. ठीक है, example. Why it is given here? It is only given here because coordination compounds अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है according to NCERT, ठीक है? So these are complex compounds, है ना? Why do they form complex compound? The reason are three. क्या reason है सबसे पहला? The first reason is comparatively smaller size, high ionic charges, and availability of d orbitals for bond formation. These are the three reasons. ये सवाल आता है, why do they form complex compound? Then you are going to answer, there are three reasons. These are the three reasons why they are going to form complex compound. ठीक है? This will be there in the slides, no need to write it down. Next property is the catalytic property. Now, catalytic property is present because of two reasons. Why? First is they adopt multiple oxidation state, है ना, कि आपके पास Mn का जो है 2 पॉजिटिव भी हो जा रहा है और मेटल का 3 पॉजिटिव भी हो जा रहा है, कुछ कुछ का मेटल का पॉजिटिव भी हो जा रहा है. If you go into the higher oxidation state, halides or oxides में maximum that you can go for manganese is +7. So they have variable oxidation state. That is why one reason is that, and they can form complexes. The another reason is that we are using transition metals as catalytic, as catalysts. Okay? So these are the two reasons. They will ask why transition metals show catalytic property. Because they can adopt multiple oxidation state, variable oxidation state, and they can form complexes. Two reasons. Okay? Then there are few catalysts which are important. That is vanadium. 5 जब vanadium लिखते हैं ना, that means vanadium with 5 positive charge. ठीक है? It is 5 positive charge and it is an oxide. It is used in contact process. ये MCQs वगैरह में आ सकता है directly. Finally divided iron in Haber's process. Nickel in catalytic hydrogenation process, है ना? आप लोगों ने ये चीज पढ़ा होगा that when you are having let us suppose ketone, when you have ketone and you do H2 in the presence of nickel, PD or PT, then you form 2-degree alcohol. ठीक है? So hydrogen gets attached here and hydrogen gets attached here. तो ना ये hydrogenation process में nickel, PD और PT का इस्तेमाल होता है. ठीक है? So these things are also there in the notes. You don't need to write it down. अब इसके बाद जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, इसमें आपके पास जो मेन पोर्शन अब बचा है, दैट इज दी, वो है आपका, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. So there are two important compounds that we have to study. एक तो है आपका K2Cr2O7 और दूसरा है KMnO4. These are the two important compounds that we have to study. K2Cr2O7 तो पहली बार देखेंगे हम. Then we have to study the preparation, properties and structure of potassium dichromate. All of these three things are important. The preparation से भी सवाल आते हैं, properties से भी सवाल आते हैं, structure से भी सवाल आते हैं. अच्छा, by the way, जो हम लोगों ने डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ ली ना, 50% से ज्यादा सवाल यहीं से आते हैं, फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है, चलिए लेट मी जस्ट क्लियर दिस स्लाइड. नाउ बात करते हैं पहले इसकी प्रिपरेशन की. ठीक है, now how do we prepare it? It is done by the fusion of chromite ore with Na2CO3, sodium carbonate. You start with fusion of chromite. What is chromite? Chromite is FeCr2O4.
then you have Na2CO3, you react it with oxygen, and you are going to get sodium dichromate. Either you are going to get sodium chromate, which is an orange solution. When you get Na2CrO4, when you get sodium chromate, after this, there is one more process. It is going to be filtered. This is a yellow solution. Then the second step is a reaction with H2SO4. ध्यान से देखते रहिएगा. पहला स्टेप क्या है आपके पास? फर्स्ट स्टेप इज द फ्यूजन ऑफ क्रोमाइड और विद सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट से आपको क्या मिला? सोडियम क्रोमेट. ठीक है, Na2CrO4. Now, moving on. Second step is reaction with H2SO4. In the acidic solution, you get sodium dichromate, Na2Cr2O7. K2Cr2O7, potassium dichromate. This is sodium dichromate. ठीक है. Now, sodium dichromate, it is orange solution. A yellow solution of sodium dichromate is filtered with acidified sulfuric acid. है ना. तो yellow solution था, उसको filter किससे किया? Sulfuric acid से. It reacted with sulfuric acid and it formed sodium dichromate. Once it forms sodium dichromate, then we do another reaction with KCl. तो वहां पे बस exchange of ions हो जाएगा. What is going to happen? सोडियम डाइक्रोमेट का KCl के साथ रिएक्शन होगा तो K2Cr2O7 मिल जाएगा. ठीक है. नाउ this Na2Cr2O7, it is actually more soluble than potassium dichromate. When it is more soluble, तो ये किस में रहेगा? It will be in dissolved form. ठीक है. And K2Cr2O7, it is not as soluble, that is why it will crystallize. तो ज्यादा सॉल्व हो सकता है, वो डिसॉल्व हो जाएगा. And because K2Cr2O7 is not very soluble, it is going to crystallize. So dissolution and crystallization are reverse process. जो आसानी से डिसॉल्व हो जाए, इट विल नॉट क्रिस्टलाइज, है ना, वो डिसॉल्व स्टेट में रहेगा. जो आसानी से क्रिस्टलाइज हो जाए वो जल्दी डिसॉल्व नहीं होगा, इट विल फॉर्म क्रिस्टल्स. तो दीज आर द, अच्छा ये थर्ड स्टेप है, यहाँ पे सेकंड स्टेप लिखा हुआ है हमने. थर्ड स्टेप, 3 स्टेप है आपके पास. फर्स्ट स्टेप इज सोडियम कार्बोनेट Na2CO3. सेकंड स्टेप इज सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. थर्ड स्टेप इज KCl. आपको Na2CO3 से क्या मिलेगा? विल गेट Na2CrO4. K2 H2SO4 से रिएक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा Na2Cr2O7. KCl से रिएक्ट करेंगे तो यू विल गेट K2Cr2O7. Now these are the important parts, है ना, यही important है आपके पास. पहले you are going to get sodium chromate, then you filter it using acidified, that means using H2SO4, you will get sodium dichromate. Then when you react with KCl, you will get K2Cr2O7. तो इसका ना चार्ट बना लीजिएगा. ठीक है. So these are the 3 steps for the preparation of K2Cr2O7. Make sense? Yes or no, guys? इसको लिख लेंगे आराम से. तारीफ, रबा एंड शाहिद, टेल मी. हाँ जी बताएं. तारीफ, रबा एंड शाहिद. Yes, sir. ठीक है. Yes, इसको sir. लिखना स्टार्ट कीजिए. इसको रिवाइज करना भी स्टार्ट करना पड़ेगा आपको. एक दिन में याद नहीं होने वाला है ना. हमेशा थोड़ा देखते रहेंगे, तभी ये सीक्वेंस याद हो जाएगा, और सीक्वेंस से फिर आपको पूरा रिएक्शन भी याद हो सकता है. नाउ मूविंग ऑन टू द प्रॉपर्टीज. द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हेन इट इज इन क्रोमेट स्टेट. जब क्रोमेट होता है तब कैसा होता है? येलो कलर का होता है. और जब डाइक्रोमेट बन जाता है, व्हेन इट इज डाइक्रोमेट, देन इट बिकम्स व्हाट? ऑरेंज. तो क्रोमेट से डाइक्रोमेट जाने के लिए आपको क्या चाहिए? यू नीड एन एसिड. और डाइक्रोमेट से क्रोमेट जाने के लिए एसिड का उल्टा क्या होता है? बेस. यू नीड अ स्लाइटली अल्कलाइन सॉल्यूशन. मेक सेंस? यस और नो, प्लीज टेल मी गाइस. याद रहेगा? बोलो. किसी भी तरह इसको याद कीजिएगा, ठीक है ना. तो ऐसा आप लोग बताइए, व्हाट डू यू थिंक इज मोर स्ट्रॉन्ग, एसिड और बेस? टेल मी गाइस, व्हाट इज मोर स्ट्रॉन्ग? क्या लगता है? फीलिंग क्या आती है? केमिस्ट्री की बात नहीं हो रही बिल्कुल. फीलिंग क्या आती है? कौन ज्यादा खतरनाक है, एसिड या बेस? बोलो भाई, कौन ज्यादा खतरनाक है, एसिड या बेस? Acid. एसिड, है ना. तो एसिड डालने से इट इज गोइंग टुवर्ड्स ऑरेंज. ठीक. देखिए ये गाढ़ा हो गया ना, खतरनाक चीज डाली आपने, गाढ़ा हो गया. बेस डाला आपने, हल्का हो गया. याद रहेगा ऐसे. ऑरेंज कब हो रहा है? येलो टू ऑरेंज व्हेन यू आर एडिंग एसिड, एंड ऑरेंज से येलो धीमा हो जा रहा है जब व्हेन यू आर एडिंग बेस. ऐसे याद रहेगा. यस और नो, प्लीज टेल मी गाइस. बोलो. ठीक है, किसी तरह, लेकिन आपको याद करनी पड़ेंगी ये सारी चीजें. ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस.
नाउ मूविंग ऑन। एक सवाल यहाँ पे ऐसे आ सकता है, ऐसे लिख दीजिएगा, क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आर पीएच डिपेंडेंट, आर पीएच डिपेंडेंट। क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आर पीएच डिपेंडेंट, ठीक है। मूविंग ऑन। इन एसिडिक मीडियम व्हाट इज द रिएक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। इन व्हेन यू आर हैविंग एसिडिक मीडियम, then the Cr2O7 2 negative, it reacts with 14H positive plus 6 electron, it gives you 2Cr3 positive, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये चीज याद रखिएगा, एसिडिक मीडियम में Cr2O7 2 negative, it gets converted to 2Cr3 positive, ठीक है। इतना बेसिक आप याद रखिए, फाइन। आपको इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वाटर वाटर ये सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट। कैसे करना है इसको वहां आप लोग को सिखा देंगे, इनको ये सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं। नोट्स में भले ही लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट्स में रहनी चाहिए आप सारी चीजें, लेकिन याद रखने की आपको जरूरत नहीं। याद रखने का क्या जरूरत है आपको, Cr2O7 2 नेगेटिव किस में होता है, इट इज गेटिंग रिड्यूस टू Cr3 पॉजिटिव इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। क्रोमेट में अगर एसिड एसिड डालेंगे तो कहां बन जा रहा है, Cr3 पॉजिटिव बन रहा है, फाइन। नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू ऐड पोटेशियम डाइक्रोमेट, आपने क्या किया, पोटेशियम डाइक्रोमेट को डाला किसमें, आयोडाइड में। तो आयोडाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए दिस इज गेटिंग रिड्यूस, तो इसका होगा ऑक्सीडेशन और ये बन जाएगा I2, ठीक है। आपने डाला सल्फाइड में S2 नेगेटिव में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फर में। आपने डाला टिन 2 पॉजिटिव, देन इट इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज टू टिन 4 पॉजिटिव। Fe2 पॉजिटिव से कहां हो जाएगा, Fe3 पॉजिटिव, इट इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज, ठीक है। इसको अभी यहीं रहने देते हैं, इनको ना, इसको अभी यहीं रहने दीजिए। आई विल एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, उसके बाद हम फिर इन सारे रिएक्शंस का बैलेंसिंग कैसे करना वो आपको हम समझाते हैं, ठीक है। राइट नाउ प्लीज लेट अस लुक एट द स्ट्रक्चर। बेसिक आपको यहाँ पे जो बताया जा रहा था, यहाँ पे दैट दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है ये, दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए मूविंग ऑन द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो होता है क्रोमेट का, इट इज टेट्राहेड्रल। क्या बात हो रही है, क्रोमेट की बात हो रही है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डाइक्रोमेट, वी आर टॉकिंग अबाउट क्रोमेट। क्रोमेट क्या है आपका, गिव मी अ सेकंड, ठीक है। क्रोमेट इज व्हाट, क्रोमेट इज टेट्राहेड्रल इन शेप, Cr O4 2 नेगेटिव, ठीक है। Cr O4 2 नेगेटिव इज टेट्राहेड्रल। जो डाइक्रोमेट होता है, इट इज हैविंग, इसके लिए इसका इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आप देखें ध्यान से यहाँ पे, इट इज हैविंग क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम बॉन्ड, CrO Cr बॉन्ड, ठीक है। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू रिमेंबर, CrO Cr bond is present in dichromate, fine. And both the chromium atoms, these are tetrahedral in shape. दोनों के ही दोनों क्या है, both of these are what, tetrahedral in shape. बस ये चीज याद रखनी है। आपसे अगर पूछ लिया जाए ना, how many CrO Cr bond are present in dichromate structure, the answer is 1. This is a question. Which one of the following statement is correct when SO2 sulfur dioxide is passed through acidified K2Cr2O7? के बारे में हम ना ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं आपको, ग्रीन Cr2SO4 3 इज फॉर्म, ठीक है। ये खैर उसको ध्यान रखने की आपको जरूरत नहीं है, उसको हम हटा ही देते तो ज्यादा अच्छा रहता। हैज बीन रिमूव फ्रॉम द सिलेबस राइट नाउ।
है, but green Cr2SO4 3, it is formed when you pass K2Cr2O7 from when you pass SO2 gas from K2Cr2O7. Moving on, we have these सबसे हट चुकी हैं। खैर, K2Cr2O7 on heating with aqueous NaOH, it is going to give you, बताइए क्या ये कर सकते हैं आप लोग? ये आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए K2Cr2O7 on heating with aqueous NaOH, NaOH क्या होता है? एसिड या बेस होता है, उसके हिसाब से बताइए, शायद थोड़ा आप लोगों को याद आ जाए। ये डाइक्रोमेट है। डाइक्रोमेट में आप क्या डाल रहे हैं? व्हाट इज NaOH? NaOH क्या होता है? एसिड या बेस? NaOH इज, बोलो भाई, NaOH इज, नो आइडिया। NaOH इज व्हाट? बेस ना। सो डाइक्रोमेट से क्या बन जाएगा? क्रोमेट, दैट इज CrO4 2 नेगेटिव। ठीक है, चलिए अभी इसको यहीं पर रहने देते हैं। लेट मी गो बैक टू सम रिएक्शंस। ठीक है, आप लोगों को दो चीज याद रखनी चाहिए कि जैसे we have Cr2O7 2 negative, this will get converted to 2Cr3 positive। ठीक है, एक चीज तो ये। अनदर थिंग इज व्हाट विल हैपन इफ यू आर गोइंग टू ऐड आयोडाइड या फिर सल्फाइड, अगर आप ऐड करें तो क्या होने वाला है? सो यू शुड रिमेंबर दैट सल्फाइड विल गेट ऑक्सीडाइज। सल्फाइड कहाँ बनेगा? सल्फर बन जाएगा। इतना, ये छोटी सी चीज याद रखनी बस आपको कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर हैविंग S2 negative, this will get converted to sulfur। ठीक है, दोनों के ही इसमें आप ये देखिए दैट व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। द ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर क्रोमियम इट इज हियर +6 एंड हियर इट इज +3। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? यहाँ पे दो क्रोमियम है, यहाँ पे भी आपके पास दो क्रोमियम है। द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू हाउ मच? 3। ठीक है, एंड द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 नेगेटिव था यहाँ पे। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज इक्वल टू 2 हियर। फाइन। Now the number of chromium we are having, it is equal to 2. Number of sulfur we are having, it is equal to 1. So the number of electrons involved in this reduction reaction, and this is oxidation. यहाँ पे reduction में आपको 3 2 6 electron चाहिए because each chromium atom it is losing 3 electrons. 6 positive से क्या हो जा रहा है? ये 3 positive ना, gaining, sorry, it is gaining 3 electrons both the chromium Cr2 में। तो पहले स्टेप में आप देखिए क्या होगा। यू विल हैव Cr2O7 2 नेगेटिव, ठीक, +6 इलेक्ट्रॉन्स। इट इज गोइंग टू गिव यू 2Cr3 पॉजिटिव। दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेकेंड है आपके पास सल्फर। सल्फर में S2 नेगेटिव is going to give you sulfur +2 electron. Since the number of electrons are not balanced, आप यहाँ पे सेकेंड वाली इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए? 3. So when you multiply 3, it will become 3S2 negative, it will become 3 sulfur, and it will become 6 electrons. Once the electrons are balanced, you will cancel the electrons and add the equation. Equation जब आप ऐड करेंगे, you will write Cr2O7 2 negative plus 3S2 negative। ना थोड़ा सा ब्लैंक स्पेस छोड़ दीजिएगा, कहीं अगर आपको H+ वगैरह ऐड करना पड़े बाद में, तो उसके लिए यहाँ पे जगह छोड़ दिया। ठीक है, because we are balancing, then you will write 2
Cr3 पॉजिटिव प्लस 3 सल्फर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे दैट नाउ वी आर गोइंग टू बैलेंस द चार्जेस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू try to identify the oxidation reaction, reduction reaction, the number of electrons is that is used in oxidation and reduction. उसके बाद क्या देखना है आपको, इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो गया तो काट दीजिए, देन यू आर गोइंग टू लुक एट दी चार्जेस। ध्यान से देखिएगा, वी हैव ओनली 1 मोल ऑफ Cr2O7 और यहाँ पे क्या चार्ज है, दिस इज 2 नेगेटिव -2। 3 ions of sulfur 2 negative is present, so 3 into -2, the complete charge is -2 in -6 -8 चार्ज है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कितना चार्ज है, 3 to the 6। दिस सल्फर इज हैविंग नो चार्ज, 0 है यहाँ पे, इट इज न्यूट्रल, इट इज हैविंग +6 चार्ज। ठीक है, नाउ नंबर लाइन याद कीजिए, जो छोटे बचपन में हम लोग नंबर लाइन यूज करते थे। एंड टेल मी, वी आर हैविंग एसिडिक कंडीशंस, राइट, एसिडिक कंडीशन। एसिडिक मतलब आप H प्लस कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं, इन द रिएक्टेंट ऑल्सो, इन द प्रोडक्ट ऑल्सो, कहीं पे भी आप क्या ऐड कर सकते हैं, यू कैन ऐड H प्लस एनीवेयर। नाउ टेल मी गाइस कि आप -8 है और यहाँ पे +6 है, -8 एंड +6, H प्लस कहाँ ऐड करना चाहिए, वेयर शुड आई ऐड H प्लस, वेयर शुड आई ऐड H प्लस? H प्लस ऐड करेंगे तो चार्ज विल बिकम मोर पॉजिटिव। थिंक अबाउट इट, थोड़ा सोचिए, H प्लस कहाँ ऐड करना चाहिए? वेरी गुड तारीफ, है ना। -8 में हम लोग H प्लस ऐड करेंगे एंड वी नीड टू ऐड H प्लस सो मच सो दैट इट बिकम्स द ओवरऑल चार्ज इन द रिएक्टेंट साइड, इट बिकम्स +6। सो -8 से लेके +6 तक जाना है। नंबर लाइन में हाउ मेनी टाइम्स यू विल हैव टू जंप इन द नंबर लाइन, हाउ मेनी टाइम्स विल यू हैव टू जंप टू गो फ्रॉम -8 to +6? 14. वेरी गुड, सो यू विल ऐड 14 H प्लस। ठीक है, कितना H प्लस ऐड करेंगे, यू विल ऐड 14 H प्लस। नाउ after adding 14 H plus, you will see that the charges are balanced because -8 में क्या हो चुका है, +14, you are getting +6 now, charges are balanced, but you see now the hydrogens are not balanced। तो हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन है, 14 हाइड्रोजन, so you will add here 7 water molecule। once you add 7 water molecule, what you will see, 7 to the 14, water is तो neutral, तो चार्ज में यहाँ पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। 7 to the 14 and 7 oxygen atom, तो 7 oxygen atom भी यहाँ पे है। this is the balanced chemical reaction when you are having for sulfides। आपको और कुछ नहीं देखना है, भले ही आपके बुक में कुछ और लिखा रहा है, आपको देखना ही नहीं है। आपकी किताब में कुछ और लिखा रह सकता है, ठीक है, वो इस वजह से होगा बिकॉज दे विल नॉट टेक लाइक दिस, दे विल टेक H2S। ठीक है, तो ये दो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए उन्हें इधर उधर कुछ किया हुआ होगा, उसको आपको चिंता नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, जब आपको H2S दिया हुआ है, यू नो दैट हाइड्रोजन इज हैविंग एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1, तो सल्फाइड में क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखिए आराम से, बिल्कुल, रेज योर हैंड वंस डन। इसी तरह से ट्राई टू डू फॉर आयोडाइड, टिन एंड आयरन। Raise your hand once you're done.
Waiting for Shahid. I hope you guys remember something similar. I mean, we did similar things in redox reactions in the last class, 11th standard में. जब आप redox reaction करते होंगे तो वहाँ पे बैलेंसिंग इसी तरह करते हैं, ठीक है. सो अब आपको याद करने का जो चीज है वो बहुत कम हो चुका है. Cr2O7 2 नेगेटिव टू Cr3 पॉजिटिव एंड सल्फाइड का क्या है अपना सल्फर 2 नेगेटिव टू सल्फर 2 नेगेटिव टू सल्फर. ठीक है, सल्फाइड से सल्फर बनता है, आयोडाइड से आयोडीन बनेगा I2, टिन 2 से टिन 4, Fe2 से Fe3. ये चीजें बस आपको याद रखनी है. अदर थिंग्स इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपको नहीं याद रखना, इलेक्ट्रॉन वगैरह